Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 5 and the name of our chapter is Physical and Chemical Changes of Matter. Today we are going to study about the difference between physical and chemical changes. So my dear students, आज हम chemical और physical changes में जो differences हैं हम उस बारे में बात करेंगे. हम reactions को thoroughly study कर चुके हैं. हमने physical changes के बारे में पढ़ा है. आज हम दोनों के बारे में दोनों को compare करेंगे आपस में. Okay, my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me what are chemical changes. A permanent change in which new products are formed is called a chemical change. So my dear students, now it's time for an activity. So look at the pictures very carefully, picture A and picture B. So in both the pictures, burning is happening. Paper is burning, candle is burning. So दोनों पिक्चर्स के अंदर बर्निंग हो रही है. अब आपने सोच के मुझे ये बताना है कि ऑब्जर्व द गिवन प्रोसेसेस दैट आर बर्निंग इन ए, पेपर इज बर्निंग एंड इन बी कैंडल इज बर्निंग. सो दोनों में बर्निंग की वजह से व्हाट आर द डिफरेंसेस बोथ द प्रोसेसेस. सो अब आपने जरा गौर से इस प्रोसेस को देखना है और आपने मुझे बताना है कि दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है. बर्निंग तो दोनों में हो रही है. दिस इज अ केमिकल चेंज क्योंकि इसमें पेपर जो है इट इज टर्निंग इनटू एश एंड स्मोक, वेयर एज इसमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस दोनों हो रहे हैं. विक में केमिकल चेंज हो रहा है, वेयर एज कैंडल हैज फिजिकल चेंज इन इट. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा. कैंडल बर्न हो रही है. कैंडल बर्न होने की वजह से सिर्फ जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही है और थोड़ी देर के बाद वो मेल्ट होने के बाद जब वो हीट उसके ऊपर से हटाएंगे तो इट विल अगेन टर्न इनटू सॉलिड. सो इस वजह से जब न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं दैट इज केमिकल चेंज, वेयर एज जिसमें प्रोडक्ट चेंज नहीं होता, सिर्फ स्टेट हम चेंज करते हैं, दैट इज अ फिजिकल चेंज. सो डू दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल. सो द बर्निंग ऑफ कैंडल, द मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज रिवर्सिबल, whereas the burning of paper and the burning of wick is irreversible. So in today's lecture, students will be able to differentiate between physical and chemical changes with examples. So my dear students, अभी मैंने आपको दोनों जो है एक एक्टिविटी के थ्रू, पिक्टोरियल एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी में. Now let's quickly move forward towards the pre-reading. So what is different in physical and a chemical change? In physical change, only the state of the matter changes, whereas in a chemical change, new products are formed. If we crush ice cube, does it a chemical change or not? So, अगर आप ice को crush करें, तो is it a chemical change or a physical change? It is a physical change, क्योंकि आप उसको physically जो है वो change कर रहे हैं, आप कोई नया product उससे form नहीं कर रहे. So, quickly open page number 72 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Difference between physical and chemical changes. Physical and chemical changes both take place in matter. To study their effects and utilization, the difference between both type of changes must be studied. So my dear students, physical और chemical change जो है वो matter के अंदर दोनों होते हैं और इनके effects को पढ़ने के लिए और ये कैसे utilize होते हैं इसके लिए हमें दोनों को study करना पड़ेगा. So difference between physical and chemical changes, physical change and on the other side chemical change. Number 1, physical changes result in the change of physical properties, for example shape and size. यानी कि physical change जो है वो उसकी physical appearance को सिर्फ change करता है, वो उसकी state को change नहीं करता. That means कोई नया product form नहीं होता. Whereas chemical changes may also result in a change in chemical composition. यानी कि किस तरीके से matter compose हुआ है वो उसकी composition को चेंज करता है. नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. सम ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, कुछ फिजिकल चेंजेस जो हैं ये रिवर्सिबल होते हैं. केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस को दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता. Some of the physical and chemical changes cause serious threats to our atmosphere, such as pollution, which is a result of serious changes. Such changes should be avoided. So my dear students, हम अपने environment के साथ भी कुछ physical और chemical changes करते हैं जो कि हमारे atmosphere के लिए extremely dangerous हैं. तो हमें इस तरह के changes जो हैं उनको avoid करना चाहिए. So my dear teachers, अब आपके लिए एक note है. Make the concept of chemical changes
A parent, by mixing vinegar and baking soda in front of the class, tells students that the release of gas in the form of bubbles is a sign of chemical change. Explain other signs of chemical changes by giving example and demonstrating from daily life. So my dear students, हम already इस practical को previous lecture में perform कर चुके हैं. If you have missed that lecture, so again watch it, क्योंकि इसके अंदर जब हमने vinegar और बेकिंग सोडा को ऐड किया था तो उसकी वजह से बबलिंग हुई थी, और वो बबलिंग जो थी दैट वाज द रिलीज ऑफ द गैस. इसका मतलब है एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है व्हिच वाज अ केमिकल रिएक्शन. सो इस तरीके से आप बच्चों को केमिकल रिएक्शन जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स आपने इसको अकेले परफॉर्म नहीं करना. डू इट अंडर टीचर्स सुपरविजन और योर पेरेंट्स सुपरविजन. सो मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल रिएक्शन because only the shape and sizes are changed. So addition of mixing of vinegar and baking soda is a chemical reaction because here a new product, a gas will be released. So my dear students, melting of ice cream is there will be no new product, only the melting, the state will be changed. So that means this is a physical change. Whereas cooking of an egg, आप जब अंडा फ्राई करते हैं तो here a new product, a cooked form of egg will be formed. So this means it is a chemical change. Melting of candle. So this is the candle wax. Its melting is reversible, whereas the burning of candle wick, this is chemical change and it is irreversible. And the burning of paper is irreversible chemical change. Now is the time for evaluation. So what are difference between physical and chemical change of matter? So my dear students, quickly pause the video and state some differences between physical and chemical changes. Very good. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the practice, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and the roll number. Write physical or chemical change. So melting of butter, is it physical or chemical? It is the physical change. Now roll plasticine. When you are rolling or playing with Play-Doh, is it a physical or chemical change? You are only changing the shape, so it is physical. Next is make a yogurt. So here you will change, a new product will be formed from the milk, so it is a chemical change. And leave an iron nail in wall in water, rusting will happen, a new product will be formed. This is a chemical change. So burn a paper, this is chemical. Melting of water or freezing of water is physical. So this is how you will complete the worksheet. Next is write two differences between physical and chemical changes. For this, you can also take help from the book. And I hope you all memorize now the differences between physical and chemical changes. So complete the worksheet, then we will move forward towards the homework. For homework today, you will do question number 1 from section B given on page number 74. And you will also do question number 1 from section C given on page number 75. So here is from section B, differentiate between physical and chemical changes, give examples. Differentiate between physical and chemical changes. What happens with the original product during these changes? Also to give examples in each case. So my dear students, आपने दोनों जो है questions अपनी notebook में करने हैं as your homework. And the wrap up today, we have learned that in physical change, size and shape of the matter changes and no new product forms, while in chemical change, chemical composition changes and new product is formed. Physical changes are reversible, whereas chemical changes are irreversible. So my dear students, I hope now you completely understand the difference between chemical and physical changes. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.